एक राउंड करना है, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे राउंड करना है, सिंगल दौड़ना है। इसको मिलाते रहना है या छोड़ना है? छोड़ेंगे नहीं, तभी हमें जल जाएगा नहीं। अच्छा, मिठाई की दुकान कल खुल रही हो, पता लग रहा था सेंट्रल दिल्ली में कहीं। जी मतलब आपके स्टूडेंट पास हो गए, मतलब मिठाई बना सकते हैं घर पे? Viewers, good evening. A very happy Diwali to all of you. Let me begin by showing you something, and I want you to look closely at what will appear on your screen. Rahul Gandhi, his sleeves rolled up. Actually, it's a t-shirt. And then you have the apron sitting tight. The man standing behind the counter of a bustling sweet shop in Delhi. He's frying imartis, those golden crispy jalebi-like mithai in hot oil. Rahul Gandhi smiling for the cameras. But don't mistake this for the sweet taste of victory, viewers. This is not Rahul Gandhi prepping a feast for poll-bound Bihar, where the battle lines are drawn and the stakes could not be higher. This is an example, viewers, of the supreme disconnect, a leader lost in the froth of jalebi batter, while his party trembles under the weight of its own chaos, clashes, and what have you. Let me draw a contrast. The NDA juggernaut rolls on in Bihar, fueled by PM Modi's masterstroke of power projection. There he was, striding on the decks of INS Vikrant, India's indomitable aircraft carrier. Fighter jets roaring overhead, the Tiranga fluttering. Viewers, this is messaging that resonates deep in the heartland, where voters crave strength over sweets, mazbooti over mithai, if you will. And in Bihar's dusty polling booths, that edge is sharpening the NDA's blade. Alliances are solid, momentum is building, whispers of a third straight sweep growing louder by the day. Let's talk about the Congress camp. It's a divided house, to say the least. Infighting that's not just petty, it's paralyzing for the party. Factions clawing at each other, old wounds festering into fresh betrayals. Viewers, Congress is not just battling its own ghosts, it's turning on its so-called ally, the RJD. Whispers of backstabbing in seat-sharing talks, accusations flying thick and fast, open blame game, even violent clashes, if you remember the visuals from the airport. And if that is not enough, now the stench of a scandal, allegations of ticket selling. The insiders are saying loyalists have been sidelined and deep pockets have been given tickets. So while this is happening in the Congress camp, what does Rahul Gandhi do? He stirs sugar syrup in Delhi. Where's the firefighting, you would ask? The call for unity, discipline, what have you, the strategy to stitch the alliance together, the campaign heat, all of this is absent, just like Rahul Gandhi. Viewers, maybe the Congress party has forgotten how to fight because it's too busy fighting itself. And this is not the case only in Bihar. Look at what's happening in Karnataka. So in the end, Bihar won't vote for man who makes the sweetest imarti or jalebi. They will vote for the leader who makes the nation powerful, unbreakable. And as the polls loom, one side surges on strength, the other seems to be sinking in syrup of irrelevance. But viewers, more seriously, the real flavor in Bihar is power versus perception, unity versus division. And in politics, the proof is in the pudding, or in this case, the polling. Sample the reactions. जो गठबंधन अपने घटक दलों को नहीं संभाल सकता, जो 5-6 दलों को एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार और बिहारियों को एक साथ कैसे रख सकता है? ये सवाल आज की तारीख में जनता पूछ रही है। ये सही है कि समय पर हम लोग आपसी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी विड्रॉवल के वक्त तक, समय तक हम तमाम मामलों को सुलझा लेंगे, आपस में बैठकर हम उसका रास्ता निकाल लेंगे। हमारा एक ही उम्मीदवार होगा, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो कहिए, उसका एक ही उम्मीदवार होगा।
हम लोगों को गुमराह किया गया, हमें डार्क में रखा गया, हमारे साथ राजनीतिक धूर्तता की गई, आरजेडी की तरफ से भी हमें विश्वासघात मिला। परंतु कांग्रेस जो इंटरवेन कर सकती थी, मामलों को देख सकती थी, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी हम लोग मानते हैं बड़े भाई की भूमिका में, उनकी भी भूमिका उचित प्रतीत नहीं हुई। तो फिर अब आगे रास्ता तय करेगी हमारी पार्टी, हमारे नेता तय करेंगे कि आगे कैसे राजनीतिक सफर तय करना है। Let's open this up. Sanju Verma is the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Dr. Rajkumar Rajan, the national spokesperson of the Rashtriya Janata Dal. Vivek Kumar ji, spokesperson of the Jan Suraj Party. Nikhil Jain, Dr. Akashdeep Muni, both political analysts, and Dr. Anand Ranganathan completes this panel. Nikhil, what do you make of the two visuals that I just spoke over? Rahul Gandhi frying Imartis, jalebis, what have you in Delhi, and Prime Minister Modi on INS Vikrant. Pranesh, so you said that the people of Bihar are not going to vote for the person who makes the best jalebis. I'll also say that the people of Bihar are also not going to vote for the person who wears the best fancy dress. Now, I'm not naming any names, so I would hope that you or the BJP spokesperson are not going to jump and pounce at me. Secondly, चिराग पासवान स्टेटमेंट यू प्लेड हु सेज कि महागठबंधन अपनी 4-5 पार्टियों को साथ नहीं रख सकता, ये वही व्यक्ति बोल रहे हैं जिनका गठबंधन इनका घर का सामान घर में नहीं रख पाया था, घर का सामान घर से बाहर फेंक दिया था। रामविलास पासवान जी की तस्वीर सड़क पे पड़ी थी एंड आज चिराग पासवान आके बोल रहे हैं कि महागठबंधन को साथ में रहना नहीं आता। See, at the end of the day, Pranesh, the voters of Bihar are very smart. They know the alliance that they have to vote for. They know the alliance that is going to stand up for their rights. The alliance that, made sure that vote chori campaign was a success, that the election commission had to cave down under the orders of the Supreme Court, that millions and millions of voters could not be disenfranchised. And it is the Gathbandhan, it is the alliance that is talking about employment in Bihar and not some sort of fancy dress competitions or kurta phad competitions that are happening in the NDA alliance right now. Fancy dress competition, let me just correct you, Nikhil. Maybe you become so insensitive or maybe you're ignorant. The uniform is not some fancy dress. That's the uniform that our, braves don. That is not fancy dress. The clothes that the Prime Minister is wearing is not fancy dress. So, I just wanted you to know what you're talking about. Now, Dr. Muni, look at what's happening in the Congress camp. Forget the BJP. Are you happy with the turn of events? People are saying ticket chori ho rahi hai, tickets are on sale, there is corruption. See, Pranesh ji, we have to understand Bihar politics altogether. Talking about the seat sharing, what you were talking in the initial part. In 2000 Bihar Assembly elections, the BJP and JDU were in alliance. Still, JDU and BJP were fighting against each other on many seats. Like in this case, this time, Congress and RJD. 2020 Bihar elections, it happened when Lok Jan Shakti Party, then ally of BJP at national level, decided to go solo and field candidates against BJP and NDA allies, including JDU. So this type of coalition is not new to Bihar. Talking about what actually people will be voting, and NDA has been in power since last 20 years in Bihar, but still Bihar is the poorest state of India. If BJP isn't able to do Vikas, let's other do the Vikas. As per the National Multidisciplinary Poverty Index. No, one minute, Dr. Muni. Why do you complicate a debate as straightforward as this? Numbers pe aap aa jayega. I'm not stopping you from, listing data. But you're saying the BJP has left Bihar or the NDA has left Bihar, in doldrum. So let the other two parties. Other two parties, is the Congress even a party in Bihar? Are you even in the reckoning? Look what's happening in your camp. Are you prepared for the role that you want? आपके अपने नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं. एयरपोर्ट पे आपके नेता पे हमला हो गया. किसने किया? पार्टी वर्कर्स ने किया. आपके नेता बोल रहे हैं कि टिकट्स 5 करोड़ में बेची जा रही है.
उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए में है, पर वो बोल रहे हैं कि ना कि इस बार कुछ भी अच्छा नहीं है एनडीए में। उपेंद्र कुशवाहा वो कांग्रेस के तो में नहीं है। जेडीयू एमपी खालिद अनवर तो एनडीए में है, वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के विकास वर्सेस मूर्खा रिमार्क्स से अग्री नहीं करते और वो कभी भी एंडोर्स नहीं करेंगे ऐसा पॉलिटिक्स। आई एम कोटिंग इन पब्लिक डोमेन। पहली बार इतने सारे क्रिमिनल्स को टिकट दिया गया। प्रदीप महतो को टिकट दिया गया जनता दल यूनाइटेड से, जो अशोक महतो के नेफ्यू हैं, जो एक गैंगस्टर है, नॉन गैंगस्टर है बिहार में, कोई भी बिहार में जानता है उनको। लवली आनंद, वाइफ ऑफ फॉर्मर एमपी आनंद मोहन, जो जेल में है। रामा देवी, विडो ऑफ बिहारी प्रसाद, नॉन गैंगस्टर। ये सब होने के बाद नाम छूट गया आपसे, एक नाम छूट गया, शहाबुद्दीन का नाम शायद आप भूल गए या वो दूसरे पेज में होगा। देखिए, जस्ट टर्न ओवर द पेज, यू विल हैव हिज नेम। एंड बाय द वे, दिस उपेंद्र कुशवाहा एग्जाम्पल डज नॉट वर्क बिकॉज डिस्पाइट द डिफरेंसेज देयर इज डिसिप्लिन. Has he done something which hurts the alliance or the interest of the alliance, which is not the case in Mahagathbandhan? Let's turn to the RJD spokesperson, Dr. Rajkumar Rajan. Dr. Rajan, if you think that Congress, is not worthy of the tag of an alliance partner, तो आप उनसे सीधा कह दीजिए कि हमें alliance नहीं करना है. ये लड़ाई झगड़ा हर रोज का क्यों? देखिए, महागठबंधन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। महागठबंधन की नींव जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिकी हुई है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ एनडीए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका सशक्त उदाहरण आप देखते हैं कि एनडीए में जब सीट बंटवारे की बात आई, बिहार प्रदेश का चुनाव है लेकिन पटना में उसका निर्णय नहीं हुआ, उसका निर्णय दिल्ली में हुआ और दिल्ली में बीजेपी के बड़े लीडर के यहाँ सभी छोटे छोटे पार्टियों के प्रतिनिधि को बुलाया गया और एक निर्णय थोप दिया गया। और उस निर्णय का अतिशोक्ति मतलब कहना चाहिए, क्योंकि जब वह निर्णय के फलीभूत के कारण जब बिहार में वह लीडर छोटे छोटे पार्टियों के लीडर पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और मांझी जी, तो आप देखें कि तीनों के स्टेटमेंट क्या हैं। चिराग पासवान, डॉक्टर राजन, जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद भी तो वो एक साथ ही हैं। आपके अलायंस में देखिए क्या हो रहा है। एटलीस्ट 9 जगह पे तो आप अपने अलायंस पार्टनर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, 12 सीट पे। ये भी लोकतांत्रिक आप बोल दीजिए कि इससे बड़ा एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का क्या हो सकता है कि वन अलायंस पार्टनर इज फाइटिंग द अदर। सर, दिस इज बिजार। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने का अर्थ है कि सबको समान रूप से व्यवहार करना, सबकी मान्यताएं विश्वास का ख्याल रखना, किसी के ऊपर थोपना नहीं है। ओके। लेकिन हमारे यहाँ है थोड़ी सी गतिरोध थी, वह इसीलिए कि हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो गतिरोध मुझे लगता है अब जब राहुल गांधी जी ने इमरती बना लिया है तो वो गतिरोध निकल जाएगा। Sanju Verma ji, I am coming to you. Let me get in the Jan Suraj spokesperson, Mr. Vineet Kumar. Vineet ji, ये जो महागठबंधन में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस है, उसको आप कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच। मैं इस कॉन्ट्राडिक्शन को ऐसे देखता हूं कि भाई कांग्रेस इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड these parties have no agenda. The real agenda of these parties is that how they can get more seats so that there can be more loot sharing amongst them. So, they are not in frame. Rajad is a party which is known for selling guns and grabbing land. They have never come in power since 1995 again, despite all the booth looting and everything they could do in their capacity. So people of Bihar have rejected Mahagathbandhan and RJD and they are a matter of past. Now what I am surprised, Pranesh ji, and what makes my heart bleed as a Bihari, that what is that we are discussing? We are in middle of an election and about a state which is languishing at the bottom of all human development indicators, and we are still talking about seat sharing, consensus between parties, and just see the fear of breaking the duopoly of Bajpa and Congress and Mahagathbandhan.
that a party like Jan Suraj, for the first time in Bihar in last 35 years, there is a credible alternative that as big or, as big as Mr. Amit Shah and the education minister of this country is coming and sitting in Bihar and not talking about the agenda of Bihar or the core issues of Bihar, but are trying to manage the candidate of Jan Suraj. No, Mr. Kumar, if that is the case, then ask your supreme leader Prashant Kishore to contest elections and lead from the front. So Sanju Verma, let's address the fundamental point. Prime Minister Modi on INS Vikrant, Rahul Gandhi, frying or making imartis, jalebis, what have you, and the Congress there crumbling in Bihar. Pranesh, what I like best about you is that you never hesitate to call a spade a spade. The Congress paid panelists here tried being smarter by half, saying, "मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, fancy dress, falana dhamkina." This is what this man does, engaging in ad hominem attacks. अभी मैं कुछ कह दूंगी कि सर पर बाल नहीं है तो इनको बुरा लग जाएगा. नहीं, ma'am, please, let's not, ma'am, this is not right. Please, let's not get personal. Please. Let me come to the point, Pranesh. Okay, I'm coming to the point. पहले तो जो जन सुराज के यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां प्रणेश. लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं. तो प्रशांत किशोर, he has made a reckless allegation. Amit Shah, Dharmendra Pradhan are trying to intimidate the Jan Suraj candidates. इसलिए 3 हमारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन वापस ले लिया. I want to ask Prashant Kishore one thing. Why are you not contesting Bihar Assembly Elections 2025? आप डरकर भाग गए क्या? The second point I want to say, he keeps saying हम तो 10% वोट शेयर लाकर रहेंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए. So Pranesh, something which nobody seems to be dwelling on is that there were by-elections to 4 very important assembly seats in Bihar in November 2024. Prashant Kishore's Jan Suraj got a 10.3% vote share, but refused to win any single by-election. And I'm telling you something. Even if Prashant Kishore's Jan Suraj gets a 10 or 12% vote share, they will not be able to translate that into winnable seats. That's my first point. My second point is, there are 243 seats in Bihar, और महागठबंधन यानी महाठगबंधन ने 255 प्रत्याशियों को जमीन पर उतारा है चुनाव के लिए, which means on at least 12 seats there is a so-called friendly fight between Congress and RJD and the left, and Congress and the left. And the third point I want to make is, Rahul Gandhi was engaging in false bravado saying, पिछली बार हम 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार 80 या 90 सीटों पर लड़ेंगे. But look at the arithmetic. RJD is contesting on 143 seats. IP Gupta's party is contesting on 3 seats. Mukesh Sahni's party is contesting on 15 seats. मतलब क्या बच्चा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस मुश्किल से 60 या 61 सीट्स पर कॉन्टेस्ट करेगी. Pranesh, and let me give you one important data point in 2 seconds. Last time, in 2020, the Congress contested on 7070 seats and won 1919 seats with a strike rate of 27%. Now, if you extrapolate that performance and assume that the Congress will contest on 61 seats and have a strike rate of 27%, it means that the Congress will win 16 seats, at best 17 seats. तो कांग्रेस का बिहार में पहली बार वजूद क्या है? नहीं, वो तो बाद में, that comes later. But Dr. Ranganathan, I mean, look at the optics here. This has to be the most democratic alliance, not just in Bihar, but on the planet. On at least 12 seats, they are taking on alliance partners. That is, some measure of democracy. And you have Rahul Gandhi celebrating already with Imarti. Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists, and wishing everyone a very happy Diwali. Pranesh, on your panel tonight, there are 2 people who speak with logic and 4 who do not. So please give me ample time to combat the barrage that is going to come our way, mine and Sanju's. Now, a couple of points out here. As far as your question about aircraft carrier is concerned, it's very simple. I can finish it in one sentence. Today, the aircraft carrier is carrying a leader as well as our brave armed forces. And in the days of the Congress, the aircraft carrier used to carry diners, butlers, and Italian guests. That is the difference of the old India and the new India. Now, I
talking of New India, I want to talk to, the spokesperson of Jan Swaraj, and I wish him, Vivek ji, all the very best. It's a new party, and any new party has to be welcomed. I hope he can hear me right now. Because he's a new entrant, and all of us remember when Kejriwal came in, he had our best wishes, and of course he won, and maybe the same luck would favor Vivek ji and his party. But I have two questions to ask. When he talked about people, the indicators of Bihar, especially the educational ones, are in the bottom, I want to ask him a very simple question. What are the educational qualifications and degrees of their leader, Prashant Kishore? And the second question is again very simple. Prashant Kishore ji in one of the interviews said that we are a new party, we are an honest party. We will not take any person as a candidate who has a serious criminal charge against him. I want to ask him, Vivek ji, do you still are going to be resolute in that promise of not selecting a single candidate who has a serious criminal charge of rape or dacoity or kidnapping against that person? बोलिए विवेक जी. नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक पहले तो रंगनाथन जी का बहुत बहुत धन्यवाद. वेरी वैलिड क्वेश्चंस. I would set the record straight. If there is any one candidate who you have found any evidence, of any wrongdoing that they have done, we will be happy to take back their nomination. And in fact, we are the only party which have said things on record that this time, or for the first time in last 35 years, it doesn't matter which party wins, which MLA wins. Parties and MLA has been winning Bihar for last 35 years. Bihar has not been winning. People of Bihar has been losing. 243 good candidates should win and come to the assembly. So I'm setting the ball straight. Is there any other party which has the courage to say the same thing? Secondly, responding to even Sanju ji, that if we are such a small party, we are so irrelevant, why people are so scared of us? Why so-called big ministers, supreme leaders have to stay in Patna and manage our candidates? Sir, what is this staying in Patna business, sir? अगर वो capital है तो वहीं रुकेंगे ना, अब कहाँ चले जाएंगे? और ऐसे नहीं होता है. Dr. Ranganathan is asking you a follow-up. No, thank you. Vivek ji has been very honest. I hope Vivek ji can hear me. I really appreciate his honesty. Vivek ji, एक मिनट सुन लीजिए. Vivek ji. Yeah, Dr. Ranganathan, go on. Yes, Vivek ji, Vivek ji, thank you so much for answering my second question. Can you please answer my first question? What are the educational qualifications of Prashant Kishore and his degrees? Yeah, see, it's again so ironical that you are so keen on knowing Prashant Kishore's degree and qualification. Look at the apathy, look at the state of Bihar, that a current serving deputy chief minister, Prashant is not in any that's political okay, position. but you've made, no, 1 minute, sir. You've made a mincemeat of the deputy chief minister. वो affidavit नहीं बोल पाते, वो plenty बोलते हैं, वो pronunciation नहीं बोल, वो तो उनका तो जो होना है वो तो हो गया है. लेकिन आप लोगों ने you've set the bar high. Prashant Kishore said, ये बता देंगे, you are dishing out certificates. आप अपना भी बता दीजिए. See, there are two ways to answer this. One, it is already out in the public domain. 1 minute. विवेक जी, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं. 1 minute. संजू वर्मा, 1 minute. 1 minute, sir. How can there be two ways? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पार्टी का नाम क्या है, can there be two ways of answering that? If I ask you what is your full name, can there be two ways? Sir, why is this hesitation in disclosing the qualifications of Mr. Prashant Kishore? अगर देखिए ऐसा तो कोई है नहीं कि 8th standard अगर पढ़े तो that is some disqualification. He can still lead the party, have his own party, etc. Just answer the question and then we can move on, please. Like Mr. Modi and Mr. Nitish Kumar were fools to take advice from Mr. Prashant Kishore. Yeah, which is why all the more reason tell the world. What has he done? It's laughable. Are you on live television? Are you questioning the wisdom of Mr. Modi and Nitish Kumar? I am not questioning the wisdom of either Prashant Kishore or your good self or anyone else. Just answer the question. ये problem क्या है इसमें बताने में?
नहीं बता तो रहे भाई, उनका ही इज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, ही हैज वर्कड विद यूनाइटेड नेशन एंड आई थिंक व्हाट्स सो सैड प्रणेश जी दैट यू आर पुटिंग अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ मैसेकर, इसीलिए तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना गिर गया है। अ मैसेकर एंड हु हैज नॉट पास्ट टेंस, यू आर पुटिंग द प्रशांत किशोर एंड सम्राट चौधरी इन द सेम सेंटेंस। ओके डॉक्टर रंगनाथन, दैट्स योर आंसर, यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट। नहीं देखिए, इतना आसान होता है, केजरीवाल जी को समझने में 2-2.5 साल लग गए थे, क्योंकि वो चीज ही ऊंची है। प्रशांत किशोर जी ने अभी से अपना पूरा सब खोल दिया। इनसे एक सिंपल सवाल पूछा था, भाई आपकी डिग्री और क्वालिफिकेशंस क्या है? मैं बता दूंगा, जन स्वराज के जो प्रतिनिधि यहां पे बैठे हैं वो विवेक जी बता देंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीए, एमए, पीएचडी, पोस्ट डॉक एंड टैब। अब आप बता दीजिए प्रशांत किशोर जी कौन सी है? ओके, लेट हिम थिंक अबाउट दिस। देखिए विवेक जी, कोई जल्दी नहीं है, यू हैव 30-40 मिनट्स मोर, you can also send a WhatsApp to your team and get the real thing, but Sanju Verma has been wanting to say something. जी मैम। प्रणेश, पता नहीं आप एक ऐसे ही एंकर हैं या आप ही एक ऐसे एंकर हैं जिसकी डिबेट पर बीजेपी वालों को मिन्नत करनी पड़ती है और विक्टिम कार्ड खेलना पड़ता है। बट एनीवे, विक्टिम कार्ड खेलते हुए कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। ये किसने कहा था? टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, ये किसने कहा था? पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये किसने कहा था? द ओनली वे टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित्स एंड सिस्टमिक बैरियर्स इज थ्रू जुपिटर्स एस्केप वेलोसिटी। मुझे आज तक समझ नहीं आया। और किसने ये कहा था यहां से आलू डालिए वहां से सोना निकलेगा? बी दैट एज इट मे, आई डोंट वांट टू ट्रिवियलाइज योर डिबेट, आई वांट टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जन सुराज प्रशांत किशोर was on Times Now, and this is in public domain. He said in the last 3 years, I made income of 241 crores. Now the tax in the highest bracket is 30%. If you add surcharge, cess, everything, effective tax rate is 43%. 43% मतलब ये 241 करोड़ पर प्रशांत किशोर should have paid at least tax of 104 crores. 103.64 crores to be precise. And Prashant Kishore admitted, मैंने सिर्फ 3 करोड़ टैक्स की भरपाई की है। तो मुझे बताइए, you're right, it's a question that he will have to answer. You see, there is no escape there. But Nikhil Jain is very happy tonight. Nikhil is wondering, ये जन सुराज spokesperson पे पूरा attention है. The heat is off me. But Nikhil, now here's the simple question. Given what we've discussed is going in the Congress camp in Bihar, don't you think Rahul Gandhi should be, using this or taking an opportunity to maybe go camp in Patna or do something from Delhi? Dinesh, before I answer your question, I just want to say that, when people are mocked their entire lives for the way they look, their only refuge is to find flaws in the physical attributes of others. So I have sympathy for such people. Your viewers are smart enough to understand who I'm talking about. Secondly, to answer your question, Rahul Gandhi can do whatever he likes. He's the leader of opposition. He's the leader of the Congress party. It is for the voters, the Congress party and the Congress leaders to decide what is the best strategy forward. And talking of stupid statements, who was it who said कि मैंने कहा फाइटर उड़ा देते हैं, रेडार में दिखेगा नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, बादल में नहीं दिखेगा? किसने कहा था कि नाले की गैस में से पाइप निकाल के मैं चाय बना लेता हूं? किसने अपने ऊपर किताब छपवा के ये बोला कि मगरमच्छ के बच्चे तालाब से उठा के ले आता था? किसने ये कहा अलेक्जेंडर को बिहारियों ने हराया जबकि अलेक्जेंडर ने कभी पंजाब क्रॉस ही नहीं करा? किसने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज तो कुछ नहीं है, हमारी उम्र हो गई? We all know that all these nagmas are by a famous Prime Minister Narendra Modi. Right. Let the voters of Bihar decide. No, 1 minute. Let the people of the country decide, and they've decided. He is serving his 3rd term. And what have you achieved? So you can, mock the Prime Minister all you want. It's fair game. The BJP does this to Rahul Gandhi, and Congress is entitled to, return the favor. But you're not answering my question. You can make fun of the BJP, but they are still winning elections. Then, after the result, you will say vote chori. But Rahul Gandhi यहाँ पे इमरती बना रहे हैं, आप बोलेंगे vote chori. Where is the campaign momentum? Dinesh,
Pranesh, this is the problem. Chit bhi meri, pat bhi meri. If the opposition parties raise allegations about the purification and the biasness of the election commission and the BJP before the elections, you say हारने का ग्राउंड सेट कर रहे हैं. If they say it afterwards, you said हारने का बहाना दे रहे हैं. If they say it after winning, you say अरे जीत तो गए, इलेक्शन कमीशन ने क्या गड़बड़ करी है. Basically, you're not willing to No, see 1 this. minute. Nikhil, I will make it easier for you. 1 minute. Dr. Ranganathan, 1 minute. Just look at this graphic which will come up. There are at least 12 seats in which the Mahagathbandhan allies are taking on each other. आप मुझे बताइए ये कौन सा डेमोक्रेटिक फॉर्मूला है of contesting elections under one alliance? Tell me. 12 seats, not 1 or 2. आप मुझे बताइए कि जब चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा था तो वो कौन सा तरीका था? Let the alliance members decide which seats they want to contest on, which seats they want to withdraw Dr. from. Ranganathan, Rahul Gandhi, he says is the leader of opposition, which he is. And then Nikhil says he can do what he wants. नहीं देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया. निखिल इज अ वेरी डियर फ्रेंड बट व्हेन ही सेज राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एड इन्फिनिटम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई. स्टार्टेड ऑफ एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन मोदी हेटरेड ने उनको ऑपोजिशन ऑफ लीडर बना दिया है. अब उनका सारा जो प्रिज्म है, देखने का नजरिया है, दैट इज कंप्लीटली एंटी मोदी. हर चीज में अब ये उठा के ला रहे हैं. अब मैं निखिल को ये बताऊं, निखिल भी केमिस्ट्री पढ़ी है, निखिल ने पहले भी, भले ही अब लॉयर हैं. इनको पता है कि मीथेन गैस होती है गटर में यार, दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग. मतलब क्या बात कर रहे हो आप, इट इज प्लेन केमिस्ट्री. और दूसरी 2015 लाख की बातें, ये सब तो लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन. लेट अस टॉक अबाउट बिहार इलेक्शन. आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आरजेडी वॉज इट अलायंस विद जेडीयू और नॉट? द आंसर इज यस. So what are you talking about? Chirag Paswan was against this और बीजेपी was against Nitish और Nitish was against बीजेपी. ये भैया पॉलिटिक्स है. यहाँ पे when they say week is long time in politics, यहाँ तो महीनों बीत चुके हैं. So you have to take it with a pinch of salt. Everyone other than the Congress is eager to ally with each other. और ये विवेक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप किंग मेकर बन सकते हैं कि नहीं, आप ये बता दीजिए. Nikhil, you answer the first part. Pranesh, first of all, methane gas, Dr. Ranganathan has studied more chemistry than me and I think he should This know is not about gas methane. Please, let's talk about the mandate here and you know the madness which is on. Please. Secondly, मैंने 15 लाख की तो बात करी नहीं, 15 लाख की बात उन्होंने खुद कर दी. Okay, but answer the question. नहीं, Pranesh, I'm already saying that the voters of Bihar are smart enough to understand that So there is no an problem in the Congress camp. There, everything is okay in the Mahagathbandhan. That is what you are saying. Sanju Verma. Pranesh, let's get one thing very clear. Something which nobody here on the panel has spoken of. BJP's vote share in 2015 was 24.42%, but we won only 53 seats. Come 2020, हमारा vote share घट गया Pranesh. From 24.42, our vote share fell to 19.46%. But guess what? The number of seats we won went up from 53 to 74, a 40% rise, which basically means what? BJP's ability to convert vote share into winnable seats is phenomenal. और कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, 9.42% वोट शेयर, उसके बावजूद सिर्फ 17 सीटें मिली. आरजेडी का हाल देखिए, आरजेडी एक्चुअली सॉ एन इंप्रूवमेंट इन इट्स वोट शेयर to 23.11 from 18.35% between 2015 and 2020, but RJD की भी टैली 80 सीटों से घटकर 75 सीटों पर आ गई. So BJP was the only big party which increased the number of winnable seats despite a fall in vote share, and that is the BJP. No, but Sanju Verma, why is the BJP so concerned about the whereabouts of Rahul Gandhi? If Rahul Gandhi is not in Bihar campaigning, it is his prerogative, his party. Pranesh, I think you summed it up so well during this debate. अभी सोचिए एग्जाम है. I remember सबसे ज्यादा डर आज तक यदि किसी एग्जाम के पहले लगा था वो था 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले. कल 10th का बोर्ड एग्जाम है. संजू वर्मा आज क्या कर रही है? मम्मी से इमरती बनाना सीख रही है, या कहते हैं मुझे आज आलू पराठे बनाना सिखाइए. So Rahul Gandhi is a leader without focus. नहीं, उनकी तैयारी हो गई है. दी अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज उनकी तैयारी हो गई है. लास्ट मिनट रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो. ही इज प्रिपेयरिंग फॉर डेज आफ्टर द रिजल्ट. वो तैयारी कर
रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, सीख रहे हैं। To just say one thing to you, who's the tallest Dalit leader in Congress in Bihar? It is a man called Rajesh Ram, who's the Bihar Congress president. और राजेश राम की जमकर पटना एयरपोर्ट पर पिटाई हुई राहुल गांधी के मुंह से एक दलित बिहारी नेता के लिए कोई एक शब्द नहीं। डॉक्टर मुनि, आंसर दैट। Now, of course, there has been problems, but Pranesh ji, as we are talking about New India and Old India, some panelists was talking. I want to ask you, want to talk about number of seats. I want to ask about Kishanganj, Araria, Madhepura and East Champaran. These 4 districts are the poorest districts in this country, and they are in Bihar, ruled by Bharatiya Janata Party for 20 years. So संजू वर्मा जी जब ये बात करती है कि ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, आप सोचिए कि ना कि 4 डिस्ट्रिक्ट बिहार के वो सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। डॉक्टर मुनि, व्हाट डज इट से अबाउट द कांग्रेस पार्टी की पिछले कितने सालों से आप चुनाव नहीं जीते हैं वहां पे, दैट यू नॉट बीन इन पावर? इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग और ऑफ एनीथिंग? डॉक्टर रंगनाथन? नहीं, मतलब अब ये देखिए, मैं आकाशदीप मुनि जी को अगर मैं अमेठी और रायबरेली के स्टैटिस्टिक्स बताऊं, कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, पावर्टी लाइन क्या है 2011 के सेंसस से, तो ये चौंक जाएंगे कि हाउ कम अ डायनेस्टी बेस्टियन फॉर 60 years हैज सच पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, डॉक्टर मुनि? प्लीज एक्सप्लेन। I will tell you what I want to say. I'll tell you one. Being a professor, you should be worried that in Bihar has the lowest electricity, drinking water, separate girls' toilet, libraries, computers, as per state government reports, as per central government reports, and still we are not worried, and we are talking about these all things that ki imarti bana rahe ki na bana rahe. I am worried about it. Of course, I am worried about it. Then I care about Bihar. Bash BJP. Why are you talking about? No, I'll tell you what I am. No, 1 minute. There was this leader. The name is Kanhaiya Kumar. He's in the Congress party, and he said something about water and Adani's. Now, if you just Google Kanhaiya Kumar, water and Adani, you will have the statement. I don't quite remember what he said. So, I genuinely don't remember. Dr. Ranganathan, अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए। नहीं, मुझे कन्हैया जी की बस एक ही बात याद है, उन्होंने कहा था 9/11 जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने करवाया था, ओसामा बिन लादेन ने नहीं करवाया था, तो उनकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे है। लेकिन मुनि जी से मैं पूछ रहा था, बैश बीजेपी बैश, यही प्रॉब्लम है। आपको पिछले 11 साल में बीजेपी या मोदी ने जो भी अच्छा काम किया वो दिखता ही नहीं है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि पिछले 11 साल में 250 मिलियन इंडियंस हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 110 million toilets have been made, 110 million tap water connections have been made, 100 million उज्ज्वला गैस कनेक्शंस, ये आपको मुझे नहीं जा रहा है डॉक्टर साहब, ये गरीबों को जा रहा है। तो कम से कम कुछ तो अप्रिशिएट करिए। ऑफ कोर्स जो कमियां हैं वो एज सिटीजन हम हाईलाइट करेंगे और करते भी हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सब चीज गलत हो रही है 11 साल में, ये आपकी प्रॉब्लम है। सो फ्रॉम लीडर ऑफ ऑपोजिशन यू हैव बिकम ऑपोजिशन ऑफ लीडर। ओके, राजकुमार राजन जी, अब आपने कहा कि कुछ दिन में हम जो भी डिफरेंसेस हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड विवेक जी, अगर आपके पास जवाब है तो आप दे दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। क्वालिफिकेशन प्रशांत किशोर का बता दीजिए। Pranesh ji, can I request, I understand the news agencies are driven by TRPs and numbers. Can I request you for 1 minute of uninterrupted time? Is that okay? But why do you think when you speak uninterrupted for 1 minute उसमें TRP नहीं आएगी? ऐसा मत सोचिए आप बोलिए 1 मिनट। नहीं, because let's, for God's sake, people of Bihar needs to win this time. For the last 40 years, there has been a duopoly कि भाजपा से डर के नीतीश को, नीतीश से डर, भाजपा से डर के लालू को, लालू से डर के नीतीश को. This duopoly has been challenged for the first time by the people of Bihar. And that's why there is this kind of fear. I have 2 humble questions. I am also amazed at how you are asking only questions to the challenger who is challenging this duopoly. I have 2 humble questions to Mr. Ranganathan and Sanju ji. Or leave it to just one question. Is Bihar at the bottom of all human development indicator and the report by Modi ji, is Bihar number 1 on Okay, let's have a quick answer, then we'll have to move on. Please, quickly. Sanju Verma, go first. I just want to tell the Jan Suraj
प्रत्याशी or whatever Pratinidhi, one thing. Between 1980 to 1990, when Congress-led alliance was in power in Bihar, Bihar's average GDP growth was 4.42%. Between 1990 and 2005, when Lalu and Rabdi Devi were the chief minister, Bihar's GDP was 3.08%. And in the last, 20 years, the GDP growth of Bihar on an average has been 7.91%. Last 3 years, it has been 14.28%. Okay. The per capita GDP of Bihar has grown from 7,000 rupees to 88,000 rupees. And let me tell you one more thing. That Nalanda University का resurrection किसने किया? मोदी जी ने. Okay, Dr. Ranganathan, you have 10 seconds. I'm moving on. देखिए, जो चैलेंजर होता है ना, वो अपना छाती फाड़ के सब चीज दिखाता है. अगर आप खुद झूठ बोल रहे हैं और सच नहीं बोल रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताना पाते, तो आप किस बात के चैलेंजर हुए? यू आर वन ऑफ देम. यू आर नॉट डिफरेंट. आई एम सॉरी. पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट यूनाइटेड नेशंस कह तो दिया उन्होंने, अब कितना पार्टी डिसिप्लिन भी तो है. We will have to move on. I thank some of you for joining us on debate number 1, viewers.